children. Vinita Agarwal. Welcome to maths class. This is the revision of your standard first, but I will explain you. Today we will do addition. Addition of two-digit numbers. So here is 54 plus 33. Now you will count on the finger and I will explain you how to count. We will add ones digit. First we will do from back. प्लस हम पीछे से करेंगे, दोनों जो पीछे के नंबर है वंस नंबर दैट इज 4 एंड 3, पहले हम उसको प्लस करेंगे. तो 4 और 3 को प्लस करना है हमको, तो पहले इसको प्लस करना है. तो वी विल काउंट 4 फर्स्ट. 1 2 3 4 एंड हियर you will mark one dot. Okay, now next you have to count 3. 1 2 3. This is your end. अब आप यहाँ से वापस पीछे आएंगे, जहाँ से आपने जिस रास्ते से आप आए थे उसी से वापस जाएंगे. तो यहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. So here 7 is your answer. You will write here 7. Same way, now we will add this tens digit. For doing this tens digit addition, same way we will count 5 plus 3. So we will count on the finger. 1 2 3 4 5. This time we will do this side. Now we have to count 3. 1 2 3. Here is the end. अब आप यहाँ से आए थे, वापस आप ऐसे पीछे जाएंगे काउंट करते हुए. Start 1 2 3 4 5 6 7 8. So here 8 is your answer. You will write 8. Now next we will come to this sum. I will explain you children. Now we will do the addition of 68 plus 20. Again we will start from ones digit. हम ये back वाले से start करेंगे ऐड करना. तो यहाँ पे हमको 8 plus 0 करना है पहले. 8 plus 0 children. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 यहाँ पे end होता है. 0 0 का मतलब कुछ भी नहीं. तो और आगे आप काउंटिंग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मतलब 8 का 8 ही रहेगा. So 8 is your answer. Next we will do 6 plus 2. Tens digit we have to do. So 6 plus 2. We will start counting. 1 2 3 4 5 6. Here it's end. And now we have to count 2 more. 1 2. So this is the end. आप यहाँ से ऐसे आए थे और ऐसे ही पीछे जाएंगे. यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. So here 8 is your answer. That is 88 is your answer. So that's all for today. Do the sums.